everybody, welcome back to the channel. Thank you so much for clicking on this video. मैं हूँ भावना, ये है Bhole डिजिटल एंड फाइनली आई थॉट 5 महीने के बाद मेरा ट्रैवल जिंक्स टूटा. As you can see, yes, I'm in an aircraft going to a new city, but ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि एयरक्राफ्ट को अपना GPS सिग्नल नहीं मिल रहा. फोन में कई बार हमारे आपके साथ होता है, बट ये एयरक्राफ्ट में नया तो खैर नहीं होगा, बट मैंने पहली बार सुना है. Because of which for the last 1 hour we've just been sitting here waiting. तो अगर ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरती है तो आप लोग मेरे साथ चलेंगे एक नए डेस्टिनेशन पर. बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारा मजाक मैं करूँगी. So hope and pray for the best and let's see when this flight takes off. That it's better to be safe than to be sorry. अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना ऑब्वियसली ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि टेक ऑफ कर दे और मिड एयर कुछ हो जाए. बट अब 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं और गोवा की फ़्लाइट से वो सिर्फ 45 मिनट की होती है. तो टेक्निकली अभी हमको गोवा लैंड करके वहाँ के टैक्सी में होना चाहिए था और यहाँ पर ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है. So I really don't know what's happening, and this has never happened in so many years that I've been flying. So a little disappointed in Go Air. Go Air हवा में नहीं जा रही. Go in the air, go air. Problem solved. आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है. कृपया इस विमान की सुरक्षा सुविधाओं के लिए हमारे कैबिन क्रू की ओर ध्यान दें. आपसे निवेदन है. So can you guess where I am, guys? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये फ्लाइट लैंड होगी, बट वी लैंडेड. हालांकि ऐसे. But here I am in Goa, my most favorite holiday destination. Can you see the new cool thing about Goa? पेट्रोल पंप पर लेडीज भी काम करती हैं. So I was not supposed to vlog in the flight, but flight इतनी mind blowing थी. हमारा पूरा 2-2.5 घंटा वेस्ट हुआ है. I wanted to go and see the sunset on my first day back here, but not possible because the sun is already going to set by the time we reach the hotel. So I'll see you guys at the hotel.
That's the beautiful hotel. गिरा तो चलेगा ना? But after you checked into the hotel, the next thing to do in Goa is to rent a bike because यहाँ पर रिक्शा का सिस्टम नहीं है तो बहुत ही महंगा है. तो सेल्फ ड्रिवन बाइक्स बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इजी है. आप जिस भी होटल में रहेंगे वहाँ बाहर आपको एक नहीं दर्जनों ऑप्शंस मिलेंगे. So here is my ride. And off we go. नॉर्थ गोवा तो आपको बागा बीच आना है. यहाँ पर ब्रिटिश रेस्टोरेंट में आना है, which is one of the oldest restaurants. It's been here since 1965 and अभी भी people love it because the food is amazing, the ambience is amazing. It's bang on Baga Beach. So here I am waiting for my food and enjoying the beautiful waves. दिस वॉज द फर्स्ट डे इन गोवा वेर हार्डली अ डे क्योंकि कुछ ही घंटे थे हमारे पास. हम लोग पहुँचे ही आफ्टर सनडाउन, जैसे कि अभी अंधेरा दिख रहा है आपको. बट गोइंग टू बागा, गोइंग टू ब्रिटोज, ईटिंग द लवली फूड, ईटिंग द अमेजिंग डेजर्ट. अगर आपने कभी नहीं खाया है तो आपने क्या मिस किया है लाइफ में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. इट्स गॉट द बेस्ट डेजर्ट इन द एंटायर डैम कंट्री. तो जरूर आइए गोवा एंड कीप वॉचिंग बिकॉज 2 more days of गोवा मस्ती कमिंग योर वे टुमारो एंड डे आफ्टर, होपफुली बेटर डेज. और बहुत कुछ हम लोग मस्ती करने वाले हैं, बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो कीप वॉचिंग. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए. सी यू गाइस, गुड नाइट.